भाई वेलकम टू आवर न्यू वीडियो भाई यार। भाई आज होने वाला भाई आज भाई यार बुलेटिन 22 आ चुका है। मतलब भाई मुझे विश्वास नहीं आ रहा कि भाई बुलेटिन 22 व्हाट इज दिस। वैसे आप सोच के भाई ये भाई मेरा सीपीयू दिखा रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा ऐसे नेटवर्क पिंग, ये पता नहीं भाई मेरे इसके साथ कुछ हुआ है भाई। और तो भाई पता है इसकी टेस्ट भी थोड़ा बहुत याद हो चुका है, तो फिर आपको पता होगा कि हम भाई इन भाई चीज इन ये जो शो कर रहे हैं वो सुना। और तो भाई मैं जैसे ऐसे नीचे कर रहा हूँ ये नीचे हो रहा हूँ, तो सही था। हाँ तो भाई यार आज भाई मैं आपको बुलेट 22 दिखाने वाला हूँ। वैसे भाई बुलेट 22 उतना मैंने देखा नहीं, मतलब क्या क्या आने वाला है, इसलिए भाई मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। और तो भाई जोले और तो भाई उजौत ने भाई कुछ लीक्स के बारे में भी बताया था, वो तो भाई मैंने देख लिया था लीक्स। तो वैसे अगर आपको भी चाहिएगा फ्री, अगर आपको भी चाहिए भाई ये रहेगा फ्री टाइगर फ्रूट, तो फिर भाई जल्दी और सब्सक्राइब करो और पेन वैसे अच्छा है, लोग लेते हैं। अरे भाई दिया। हाँ तो भाई यार मैं आपको दिखाने लगा भाई बुलेटिन 22, इसलिए भाई मैं जल्दी आपको दिखा देता हूँ। मतलब भाई मुझे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। वैसे अगर आपने भाई सब्सक्राइब नहीं किया फिर अभी जाओ सब्सक्राइब करके आओ, ठीक है? अभी जाओ सब्सक्राइब करो। और तो और भाई यार मैं आपको दूंगा एक आध कमेंट में अपनी यूज़र आईडी लिख देना, और तो आप कमेंट में अपनी यूज़र आईडी लिख देना, ठीक है भाई? मैं भी आपको दूंगा एक आध फ्री टाइगर फ्रूट। हाँ तो भाई जल्दी आ, तो भाई मैं आपको जल्दी दिखाता हूँ। ये तो ब्लॉक्स हो गए भाई, तो रोब्लॉक्स सब एक कुछ जीपीयू दिखा रहा है। अगर आपको पता है कि इसको कैसे हटाया जा सकता है तो बता देना, ठीक है? जबकि गाइस भाई ये रहा आपका बुलेटिन 22। आप भी तो देख सकते हो कि भाई मैंने आपको आखिरकार दिखाई दिया आपका बुलेटिन 22। तो फिर भाई जल्दी हम इधर पढ़ते हैं क्या 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 नया है। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई? तो देख सकते हो भाई कितना कुछ चैनल वाला। तो फिर भाई जरा इधर से पढ़ते हैं ब्लॉक सूट 22। ओके, और तो हमें कुछ इमेज दिखाई दी है, और अगर आप देख सकते हो तो भाई ब्लॉक फ्रूट भी लिखा पड़ा है। और इधर एक आदमी है चांद वाली आइसक्रीम खा रहा है, चांद वाली आइसक्रीम। चांद वाली आइसक्रीम, मून फ्रूट, मून फ्रूट आएगा भाई शायद से, लगता तो है। पर भाई ये शायद से पता नहीं कौन सा बंदा है। इधर केकड़ा, इधर ब्लॉक सूट लिखा पड़ा है। इन सबको तो देख लिया, ये भी ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है? इधर देखते हैं। और तो भाई यार ये जुलाई 17 2026 को आ चुका है, ठीक है? द ब्लॉक सूट बुलेटिन Navgeva managed innumerable new skins of the horizon and more. ओके, इसको पढ़ते हैं। नो बार सेलिंग ब्लाइंड विद अ न्यू मैप बाय योर साइड। नो मोर सेलिंग ब्लाइंड विद अ न्यू मैप बाय योर साइड। ओ मतलब एक आध मैप मिलेगा हमें कि जहाँ की कहाँ पर क्या है। मतलब अगर आपने वो देखा होगा फर्स्ट ही, तो फिर वहाँ पे लिखा होता है ना, एक आध बोर्ड है जहाँ पर वो बहुत सारे जंगल आइलैंड बने पड़े हैं, मिडिल टाउन बने पड़े हैं उधर, वो 15+ जंगल में। तो फिर वैसा ही है, वैसा कुछ है, वैसा ही एक और हमारे मैप हमारे हाथों में आएगा मैप। ओके, who else has gotten lost at the sea? Don't worry, it is a natural after all. The seas is so vast that 97% of it has yet to be discovered by the world. Removed scientists. Between the defense fog bands and trying ocean tackle, keep the track with your hand in direction. अच्छा, मतलब मेरे का तो वो ट्रैकिंग डिवाइस मिलेगा हमें।
I had already said as what nightmare. Oh, nightmare? No. Thankfully, it is not longer. Oh, ज़्यादा दूर नहीं है. A probable anyone is to deal with the new navigation chat begin handed out across the sea have completely changed how I explore can mark location as I discover them even magnet to find my way. ओके मतलब एक आती है जो बंदा है ना मतलब ये जा रहा था और तो भाई यार इसको ना भाई वो दो इसको बोला गया था कि भाई तुम्हें ना वो 2 आइसलैंड बाद तुम्हें का तो वो वोल्केनो वाला दिखेगा तो फिर उसमें बस जाना तो फिर ये उसके बारे में बता रहा है. देखो इधर लिखा भी है हाउ फिनिश लीड आई अबैंडेड देयर 3 आइसलैंड अगो. 3 आइसलैंड अगो कौन से आइसलैंड में था भाई. So render keep your eye out for your own a new Iceland improve map making its way to you. If you ever felt like the world is too big to keep track of, it might now finally feel easier to navigate. Magma Village on Edge. ओ भाई मैग्मा विलेज का अपडेट अच्छा भाई अच्छा है भाई मैं तो बोलता हूँ कि भाई सेकंड सी को भाई अपडेट ला दो यार बेचारा उसका भाई ग्रीन जोन भाई मुझे अच्छा ही लगता. ग्रीन जोन मतलब क्या फूल पत्ते उसका भी यही लाओ भाई. फॉर एज लॉन्ग एज द मोस्ट ट्रेडर्स ऑफ मैग्मा for Magma Village can remember the soldier station feel like her palace. वहाँ पे है नहीं मैग्मा विलेज में वो होते हैं मैग्मा सोल्जर्स नहीं मिलिट्री सोल्जर्स तो फिर ये वही मिलिट्री है जो अभी पूरे आइसलैंड को तोड़ रहे हैं. ओ भाई ये पीपल गुस्सा हो रहे हैं देखो ये भी चिल्ला रहा है वो भाई तो दूसरी साइड है और ये भाई जो निकाल रहे हैं मैग्मा ओर्स है जो हमें वो उनसे मिलते हैं मिलिट्री सोल्जर को मार के. वो मैं उसको देखा नहीं ये कोई भूत टाइप है क्या. या फिर ये कोई बॉस वाला रेड होगा जो अभी इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म करेगा. आई डोंट बट जो मुझे उतने तरीके से पता नहीं. Like Epping Force and more the like neighborhoods, they ate at the same stalls, walked the same trails, and noted that the same notes is passing. So some of us had generally starting for considers them a part of the Iceland's community. However, that is good. Well, it is beginning to run out. In recent weeks, the military presence जो अभी वो रीसेंट जो वो है ना मिलिट्री इन्होंने तोड़ के बनाया भाई मैंने पहले बता दी मुझे पहले ही पता था. On the Iceland has swelled and so has the expansion work tearing into the volcano core. I watch recent to be punished further and further from their own homes seen like grounded shake. अच्छा भाई यार ये जो पीपल है ना भाई ये गुस्सा हो रहा है क्योंकि भाई यू नो भाई ज़मीन हिलती है इनकी ड्रिल की वजह से तो फिर भाई वो विलेज वाले बोल रहे हैं तभी हो चुकी भाई ऐसे गुस्सा क्यों होते हैं. आइए बढ़ते हैं. More ground shake and more volunteer and each a new drill and Western families who once welcomed these soldiers मतलब भाई वो इस मतलब वो इन पीपल ने ना वो इन सोल्जर्स को बुलाया था और तो भाई यार ये सोल्जर्स तो भाई पूरा वही करने लग गए थे तो फिर भाई यार ये हुआ इसलिए बोलते हैं मतलब भाई ने खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार दी.
4 months ago, during the Easter event showcase, the developers confirmed that they were already working on a much bigger update. And since then, everyone has been waiting to see what they've been cooking. We also got another exciting leak. According to admin Wen Loco, the ghost fruit could become even more powerful or even receive a brand new skin in the upcoming summer update. And anyways, before we go any further, if you want a chance to win a permanent fruit of your choice, make sure to smash that subscribe button, because only subscribers are eligible to win. And while you're at it, don't forget to hit that like button to boost your chances. Good luck, and let's get right into it. The new Oni fruit is finally in the game, and here's how it looks when equipped. This video came from big YouTuber NU, where MyGame43 was seen using the Oni fruit, and we actually got even more leaks from it. So first, the Oni fruit, which many people thought was just the Yeti mutation, turned out to actually be its own brand new fruit. As you can see in the image, it looks completely different and has its own unique design. It doesn't resemble any existing fruit in the game, which makes it very unlikely to be just a mutation. Because of that, this is most likely an entirely new fruit coming to the game. And its possible release date might actually not be this month of June. Just because it was leaked doesn't automatically mean it's coming in the very next update. We've already seen this happen many times before in Blox Fruit. Before we continue, are you looking for cheap permanent fruits? Blox Hop has you covered. You can get permanent fruits and other items at great prices multiple times, yet it still hasn't been publicly released in the game until now. So because of that, the Oni fruit could easily be something planned for future updates instead of the upcoming one. The developers usually test unfinished content privately first before fully adding it into the game, especially when it comes to huge features like new fruits, reworks, fighting styles, or transformations. Huge features like new fruits, reworks, fighting styles, or transformations. And considering how unique and detailed the Oni fruit already looks, there's a high chance they are still polishing its skills, effects, animations, and balancing before release. But even if the fruit itself doesn't release immediately, this leak is still a massive hint that the developers are actively working on it right now. That also means we could start receiving even more leaks, showcases, or hidden hints within the upcoming days, especially if the next update trailer is getting closer. So if you want to stay updated and be one of the first people notified whenever new leaks drop, smash that subscribe button and turn on the notification bell right now. There's actually a lot to expect, but let's start with the Venom rework first, because we recently got a bit of an answer from one of the admins about it. The Venom fruit, it's pretty sick. It's pretty sick. I won't say, I can't say if it's a top contender to beat Dragon, but I mean, it's dope, it's dope, it's dope. In terms of the name, I don't think it's gonna change. I think it's gonna stay Venom, to be honest. If it was a beast fruit, then I could see it being changed to Hydra, but no, I think it's just gonna stay the type of fruit it is. Now, the Venom fruit could actually become something like this, and honestly, it makes sense because Venom has always had a Hydra-like concept behind it. Multiple heads, poison spreading everywhere, and that monstrous transformation. It already feels like something that could evolve into a much bigger and stronger fruit. And there's one more interesting thing Uzoth mentioned. He said the Venom fruit will be more like a dragon-type fruit in a way, which is actually the same wording they used
back when they talked about the Control rework. So if you remember how insane some of the recent reworks have been, this might be a huge hint about what's coming. Basically, we might be looking at another overpowered fruit entering the game. The developers have been consistently making reworks stronger and more unique, even for fruits that used to be considered average or common. Just look at the previous updates. Each rework made the fruit way more powerful than before. So if the Venom fruit follows the same pattern, we could see new abilities, stronger transformations, and maybe even a completely redesigned combat style. It might become one of the most dangerous fruits again, for both PvP and grinding. At this point, it really feels like the game is moving toward making every fruit more exciting and powerful, and if that continues, the Venom rework might end up being one of the craziest updates we've seen so far. So, not long ago, this image was leaked in the general chat of the official Blox Fruits Discord server. By the way, credit to Blox Fruits News once again for posting these leaks. Anyways, in this image, we can barely recognize anything, but as you can see, right in the middle there's something that looks like a soul or a ghost, although it could also just